हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है और आज मैं नए टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ग्लासगो कॉमा स्केल एग्जामिनेशन अ वाइटल असेसमेंट टूल। द जो ये टूल है ये डेवलप हुआ था इन 1974 में बाय प्रोफेसर वरियान जैनेट एंड ग्राहम Teasdale at the University of Glasgow. The Glasgow Coma scale is a neurological scale that objectively assesses the conscious state of a person. It is cornerstone in the initial assessment and ongoing monitoring of patient with acute brain injury. So basically जो ग्लासगो कॉमा स्केल है इसको मेन इसका जो एम है सो इसके अकॉर्डिंग वी कैन असेस आर द कॉन्शियस स्टेट ऑफ पर्सन की कॉन्शियस स्टेट को चेक करने के लिए हम ग्लासगो कॉमा स्केल का यूज करते हैं। बेसिकली ये उन पेशेंट पे यूज किया जाता है जिनको अक्यूट ब्रेन इंजरी हुई होती है। सो कॉन्शियसनेस स्टेट को पता करने के लिए थ्रू विच वी कैन यूज दिस स्केल एंड असेस द level of consciousness. Next, we move to discuss the purpose and core definition of Glasgow Coma scale. So, the objective neurological scale, the Glasgow Coma scale provides the standard objective method for evaluation of patient level of consciousness moving beyond the subjective interpretation. Responsiveness domain, it systematically assesses a patient based response in three key domains: eye opening, verbal communication, and motor movement. And third one is the global clinical application. So widely adopted in emergency department, intensive care units, and various clinical setting for trauma, stroke, and overdose patient. So जैसे कि इसमें बताया गया फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव न्यूरोलॉजिकल स्केल है जो कि जिसमें हम क्या करते हैं एक स्टैंडर्डाइज ऑब्जेक्टिव न्यूरोलॉजिकल स्केल है जिसमें हम पेशेंट को इवेलुएट करते हैं उसके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बाय मूविंग द सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन जो पेशेंट के रिस्पांस के अकॉर्डिंग हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं। एंड रिस्पॉन्सिवनेस में वी कैन चेक बाय द थ्री डोमेन। जो थ्री डोमेन है उन पे हम उनको यूज करके हम जीसीएस स्केल स्कोर के अकॉर्डिंग भी हम डिफाइन करते हैं कि उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कितना है। जैसे आई ओपनिंग हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन हो गया एंड मोटर मूवमेंट्स हो गए। देन थ्री ये रिस्पॉन्सिवनेस डोमेन होते हैं। देन ग्लोबल क्लिनिकल एप्लीकेशन जिसमें हम बेसिकली वो सारी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ये GCS स्केल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटेंसिव केयर डिपार्टमेंट इमरजेंसी में एंड या फिर ऐसे सेटिंग में जिन जैसे कोई पेशेंट है जिसको कोई ट्रॉमा या स्ट्रोक या ओवरडोज पेशेंट है वो सब उन सब की जांच के लिए हम GCS इसको स्केल का यूज करते हैं। Next one is we can going to discuss the three domain in a one by one. So first one is the eye response scoring. Eye response scoring a glimpse into the awareness. So the eye response component evaluate the patient ability to open the eye, indicating the level of arousal score range 1 to 4. So इसका basically जो range होता है वो होता है हमारा 1 to 4 के बीच में। अब इफ अ पेशेंट स्पॉन्टेनियसली ओपन आइज, अगर कोई पेशेंट है अगर स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही अगर अपनी आंखों को ओपन करता है तो उसको हम 4 स्कोर देते हैं। आई ओपनिंग नेचुरली विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई इंडिकेटिंग अ कॉन्शियस स्टेट। तो अगर कोई पर्सन है अगर बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के वो अपनी आंखें ओपन करता है स्पॉन्टेनियसली तो उसे हम 4 स्कोर करेंगे। आई ओपन टू स्पीच, अगर कोई पर्सन है विथ व्हेन वी आर स्टार्ट टू speak, then the person can open her eyes regardless of any contact. Then we will provide the three score. Then third one is the eye open to pain. पेशेंट ओपन आईज ओनली इन द रिस्पॉन्स टू अ पेनफुल स्टिमुलाई। जब तक हम कोई पेनफुल स्टिमुलाई या पेशेंट पे प्रेशर नहीं करेंगे तब तक पेशेंट अगर अपनी आईज ओपन नहीं करता दैट मीन्स द पेशेंट जो है लेस कॉन्शियसनेस है और उसको हम 2 स्कोर करेंगे। देन नेक्स्ट वन नो आई ओपनिंग, अगर पर्सन आई ओपन नहीं करता तो उसे हम 1 स्कोर देंगे। नो रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलाई इंडिकेटिंग द कंप्लीट अनरिस्पॉन्सिवनेस। The third, fourth,
Next one is the verbal response scoring. So verbal response scoring assess based on the communication. So first one is the orientated. Agar person orientated hai, then we will give the 5 score. So patient can clearly state their name, location, and date. Then 4, if the person is confused, conversation present but orientation and disorientation are present. Answer may be incorrect and illogical. Then third, if the person inappropriate word, like if the person is start to randomly to conversation with unrelated topics and unrelated word randomly, he can say anything. Then second one is the incomprehensiveness sound, means gons and non-speech sound are produced. Then we will score 1 if no verbal response, completely absence of any vocalization. अगर person कुछ भी नहीं बोलेगा तो उसे हम 1 स्कोर करेंगे. नेक्स्ट वन इज द मोटर रिस्पॉन्स. सो मोटर रिस्पॉन्स जो है स्कोरिंग ही इवेलुएट द मूवमेंट्स बेस्ड होता है. सो इसमें हम पेशेंट की मूवमेंट्स, फिजिकल मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग हम उसको स्कोर करेंगे. इसमें हम 1 to 6 रेंज के बीच में हम स्कोर करेंगे. इफ द पर्सन इज ओवेज टू कमांड तो हम उसको 6 स्कोर देंगे. जैसे कि पेशेंट फॉलो द इंस्ट्रक्शन प्रेसली सच एज स्क्वीज हैंड, squeeze my hand. Then fifth one, localize pain. Patient move limb to remove the painful stimuli applied to another body part. Then fourth score, if the person withdraw from pain, patient pulls a limbs away from the painful stimuli but without localizing it. Then third, we will abnormal flexion and decoricate the posturing, arm flexed, wrist, finger flexed, and leg extended. Abnormal extensions decrevate the posturing and arm extended, abducted and pronated, wrist flexed, leg extended. Then one, if the no motor response are there, the completely flaccidity and no movement in the response of any stimuli. अगर person physically कोई भी movements नहीं करेगा तो हम उसको 1 स्कोर करेंगे. तो जो motor response है इसका स्कोर होता है 1 to 6. So interpreting the GCS score. So here we can interpret the GCS score. So if the severe, we can assess through the EVM, eye, verbal and motor response. So eye opening ke according, if the person have severe brain injury, then we can give the less than have 8 score. So that means that the patient indicate the high risk of significant neurological damage, often require the intubation. तो उसको जरूरत है कि उसको intubate किया जाए. Less level of consciousness है, high risk है उसको neurological damage किया, brain ज़्यादा damage हो सकता है. Then moderate में, if the person is scoring the 9 to 12, the patient may be drowsy but not generally able to follow the simple command. Then mild injury, if the person scoring the more than and between the 13, often seen in the conscious patient, typically alert or only mildly confused. So based on this, we can score the patient and assess the GCS score के according हम patient को conscious level को assess कर सकते हैं. So for example, जैसे they are cloud, eye opening 3 and second one confused conversation and abnormal fluctuation. Then limitation and key consideration of GCS assessment. So here we have to robust. The GCS has certain limitation that must be considered for accurate interpretation, like verbal and eye score affected in intubation and facial trauma, severe eye swelling, and can make these domain understandable. Then pediatric application, the standard GCS is less reliable for children under the 3 years क्योंकि 3 year बच्चों के इतना brain development नहीं हो पाता है. Then specific development GCS scale are often preferred. Then external factor हो सकते like sedation, alcohol, drugs, pre-existing neurological deficit and clinically alert GCS score. Necessity to careful clinical judgment and language barrier like can completely verbal assessment and alternative communication method may be needed. So these are the limitation and key consideration in the GCS assessment. Next one is the GCS as the cornerstone for critical care. So critical care means here we can clinically practicing and facilitating the consistent assessment of and guiding timely intervention for optimal patient outcomes. So rapid assessment हमें करना होगा. Enables with the evaluation of neurological status in acute
acute situation and treatment guidance, information, treatment, decision and ongoing patient management, global standard, universal recognized the trauma protocol and critical care worldwide, early deterioration detection, regular assessment help to identify the subtle changes and prevent the adverse events. So this is all about the GCS scale. So thank you for watching.